HR and KC College is no more associated with Mumbai University. So if you want to take admission in HR or KC College, then you will have to enroll yourself via HSNC University. This year HSNC ने काफी ज़्यादा process change कर दिया है. As soon as you go on HSNC University का website, they are asking you to purchase a pin of 500 rupees. So yes guys, if you want to enroll or register in HR or KC College का any program, then you will have to purchase a pin of 500 rupees, which is mandatory. तो in this video we gonna show you the step by step process, कैसे apply करना है, क्या documents upload करना है, क्या step mandatory है. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Now let's start with the step by step process. अगर आपने registration शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ ये वीडियो को फॉलो कर लो एंड स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन. अगर किया है और कहीं पे स्टक हो गए हो तो भी ये वीडियो पूरा देख लेना. अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा है तो क्या इशू है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. Go to HSNC University website. Under UG you have apply now option. You click on that, click on pin purchase. This is the amount 500 rupees that you have to pay. So enter your name, mobile number, email and the image text that you can see and click on pay now. Once that is done, you have to submit to proceed and put in your address and pay the amount of 500 rupees via credit, debit, net banking, Paytm, any wallet, UPIs. All the methods are available there. You will then get a pin like that and you have to save that PDF. You'll also get it on your email. Now go back to the website and hit registration and simple details, your board, your state, your stream, month of passing, passing year, all those details you have to fill in as it is. The PEC number is not mandatory, so you can ignore that. Next, they will ask you for your full name, gender, date of birth, Aadhaar card number, your correspondent address if you have one, or you can put the permanent address as well, your city, admission year, PIN code, and all the basic details, your contact information and your image text. Next, they will ask you for a registration number, which is right on top, and your PIN, etc., and save and proceed. Next, they'll ask you for your father's name, mother's name, your special achievement if any, category and religion, and the specific category under religion. Then you enter your 10th and 12th marks, your board, your passing stage, seat number which is on your hall ticket, number of attempts, school name, etc. And then individually add all the subjects and your marks in it. Next, you upload your photo and signature in the given size. Also your 12th and 10th mark sheets you have to upload. Be careful on this step because you will be asked to put preference-wise courses and a college, whether HR or KC, preference-wise. So fill it accordingly. Once that is done, you can click on proceed. This is what your application form will look like after hitting submit. Do not forget to preview your form before submitting and you're done. आई होप गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर नहीं भी हो रहा है, कुछ ग्लिच आ रहे हैं, प्लीज वेट करो और ट्राई करो बिकॉज वी हैव डन दिस फॉर मोर देन 20 स्टूडेंट्स एंड वी नो कि दिस प्रोसेस इज वर्किंग और उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है. एंड गाइज इफ यू वांट अ रिव्यू अबाउट केसी एंड एचआर कॉलेज, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. अगर एचएसएनसी यूनिवर्सिटी को लेके आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में कैसा है, बेटर है क्या, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है. एचआर की प्रिंसिपल मैम का इंटरव्यू मैंने डाल रखा है. जो एचएसएनसी की डिग्री है उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, ये सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. एचएसएनसी के वीडियो और एचआर और केसी कॉलेज रिव्यू का वीडियो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो एंड वॉच इट और जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा. ऑल्सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी टेल यू आई डू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन. अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेके, कॉलेज को लेके, किसी भी चीज को लेके, यू कैन गेट इन टच विद मी फॉर 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग सेशन. जस्ट ये नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.